Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. As we know that plants require 17 essential nutrients, and in general plant absorb many nutrients. A number of nutrients are absorbed by the plant, and these nutrients are utilized by the plant and involved in metabolism. But out of these so many nutrients, only 17 are essential. So 17 nutrients are essential for the plants, and these essential nutrients are categorized as a macronutrient or micronutrient. And macronutrients are absorbed in large quantity, and micronutrients are absorbed by the plant in less amount. So on the basis of the amount, these nutrients are categorized as a macronutrient and micronutrient. So this is a simple categorization, macro and micro, and the requirement of macronutrient is more. But confusion is that which nutrient is the most important. When we talk about the amount, so nitrogen is required in the highest quantity, nitrogen, N, P, K, these are the macronutrients, CHO also, carbon, hydrogen, oxygen, and calcium, magnesium, sulfur, and these are required in large quantity. And in case of micronutrient, Fe, Cu, Mn, Zn, molybdenum, boron, chlorine, nickel. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 17 nutrients are essential, but which nutrient is the most important? This is the confusion. So when we talk about the nutrient requirement, the major nutrient or the largest quantity is of nitrogen. तो जब हम इन 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, वैसे तो प्लांट्स बहुत न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन ये 17 जो है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें कि मैक्रो माइक्रो अलग अलग हैं. मैक्रो की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उसमें भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है. दैट्स वाई वी गिव मोर एम्फेसिस ऑन दिस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, phosphatic fertilizer and potassic fertilizer. So our emphasis is more on these NPK fertilizers. But the confusion is that is nitrogen is the most important? Which nutrient is most important? Which nutrient is most important? If this question is asked, then most of the student will think that nitrogen is the most important. No, it is not like that. अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि नाइट्रोजन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा इसी के हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स equally important. Now how it is possible that all essential nutrients are equally important? Why there is so? And the requirement of molybdenum is very less, nickel requirement is very less, boron requirement is very less as compared to micronutrient. Then why we are saying that all nutrients are equally important? अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट को देखें तो जिंक की रिक्वायरमेंट बहुत कम है पोटेशियम के कंपेरिजन में, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है आयरन और कॉपर से. तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को याद रखें. नाइट्रोजन इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. सिमिलरली फास्फोरस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. पोटेशियम इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट. ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. व्हाई देयर इज सो? द रीजन इज दैट when we look into the criteria of the essentiality, the first criteria is that plant cannot complete life cycle. Plants cannot complete its life cycle if any essential nutrient is absent. Suppose boron is molybdenum is absent, it is nil in soil, and we are applying nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, all the nutrients, but not molybdenum. Then plant cannot complete its life cycle. Means there may be germination, may be emergence, leaf production may be,
but not the lastly seed production, not flowering. Maybe leaf growth may be affected, flowering may be affected, seed production is affected. Means life cycle is not completed. Life cycle means if we sow the seed, then vegetative growth, then reproductive growth, then seed formation. So this is the life cycle. So any process may be affected if any essential nutrient is absent. So it means all the essential nutrients are equally important. This is very important, equally important. So iron is as important as nitrogen, copper is as important as calcium. So it means we cannot ignore any nutrient. But the problem is that, or we can say the other understanding is that these nutrients required in large quantity. So the requirement is large and the requirement is less. The requirement, there is difference in requirement. तो मैक्रो माइक्रो की रिक्वायरमेंट में तो डिफरेंस है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट को ज़्यादा क्वांटिटी में देना है और माइक्रो न्यूट्रिएंट को कम क्वांटिटी में देना है. तो एज फार एज क्वांटिटी इज कंसर्न बोथ आर डिफरेंट. बट when we talk about the importance, all 17 are equally important. So remember that none of the nutrient is the most important. कोई भी ऐसा nutrient नहीं है जो most important है, सारे ही equally important है. अगर हम किसी भी micronutrient को छोड़ दें, सपोज हम कॉपर ना दें, कॉपर नील हो जाए सॉइल में और हम बाहर से भी ना दें, तो प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. पॉसिबिलिटी में भी दैट सीड में इमर्ज, देयर में बी लीफ प्रोडक्शन बट नॉट लास्टली द रिप्रोडक्शन, reproductive phase and the seed production. So this is the reason that we give equal importance on all the nutrients. Whenever there is a deficiency of any nutrient, whether it is a calcium, whether it is a copper or manganese or zinc, we give this nutrient through fertilizer. तो ये रीजन होता है कि कोई भी न्यूट्रिएंट की अगर कमी होती है तो हम उस न्यूट्रिएंट को तुरंत देते हैं, फर्टिलाइजर के थ्रू दें, बेसल एप्लीकेशन करें, चाहे हम फोलियर एप्लीकेशन करें. सो ऑल एसेंशियल 17 न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन adequate amount so that plant can complete its life cycle. तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये 17 इनका एडिक्वेट अमाउंट में सॉइल में होना जरूरी है, नहीं तो प्लांट की लाइफ साइकिल पूरी नहीं होगी, कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ अफेक्ट होगी. अगर कोई भी डेफिशिएंट हो गया, किसी की भी डेफिशिएंसी आ गई, डेफिनेटली देयर इज पुअर ग्रोथ एंड पुअर यील्ड. सो दैट्स व्हाई ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट मस्ट बी इन एडिक्वेट अमाउंट एंड दिस अमाउंट इज मेंटेन्ड बाय द fertilizer or FYM or organic. Many sources are available through which we can maintain the quantity of this macro and micro nutrient. So that's why soil testing is very important to know which nutrient is deficient. तो soil testing करानी इसलिए जरूरी है कि हमको पता चल सके कौन सा nutrient deficient है. बिना soil testing के हम बिल्कुल पता नहीं कर सकते. उसके लिए आपको soil sample लेना पड़ेगा, किसी laboratory में soil test करना पड़ेगा. Then we can know what is the status. If any micronutrient is deficient, we should provide that nutrient. Otherwise, there will be severe loss in प्रोडक्टिविटी. जो न्यूट्रिएंट की कमी है, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, चाहे कॉपर है, चाहे जिंक है, उसको हमें फर्टिलाइजर के थ्रू देना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ और यील्ड में बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है. दैट्स व्हाई सॉइल टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो विच न्यूट्रिएंट इज डेफिशिएंट और द कंडीशन में दैट एनी न्यूट्रिएंट मे बी इन एक्सेस. इफ इन एक्सेस देन इट मे कॉज द टॉक्सिसिटी. सो देयर मे बी अनदर प्रॉब्लम. सो दिस टॉक्सिसिटी इज रिड्यूस्ड बाय अदर मीन्स. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम सॉइल टेस्टिंग कराएं एंड नो दी व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द न्यूट्रिएंट. सो ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई देयर fertilization or supply is equally important. Don't ignore copper, don't ignore manganese. We ignore the manganese, we ignore the boron. Don't ignore these nutrients because these are एज इंपॉर्टेंट एज नाइट्रोजन. तो इग्नोर मत कीजिए मैग्नीज को, जिंक को, कॉपर को कि आप सोचें केवल हम यूरिया दे दें या डीएपी दे दें तो उससे नाइट्रोजन फास्फोरस दे दें तो हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी. अगर आपकी डिफिशिएंसी हो रही है न्यूट्रिएंट्स की और ये उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ये न्यूट्रिएंट है, तो डेफिनेटली जो ग्रोथ होगी पुअर होगी, यील्ड विल बी वेरी लेस. सो ऑल macro and micro nutrients are equally important. That's why give proper emphasis, equally emphasis on supply of these nutrients. So all nutrients are equally important. कोई भी nutrient ऐसा नहीं है जो कि most important है. जितने 17 है सारे equally important है. So be clear about the importance because the plant cannot complete its life cycle if any nutrient is absent. So that's why all, whether it is macro or micro, all are equally important. None of the nutrient is the most important.
So I think you have made the clear idea about the importance of the nutrients. Thank you very much.